Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back, students, to another lecture of maths. So we were done with the exercise 8.1. So now we will start the next exercise, that is 8.2. And the first question that we are going to do is, a man got a 10% increase in his salary. If his new salary is 1,54,000, then find his original salary. Okay, students. So the question is like, we don't know about the original salary of a person, but it is being said that if that salary is being increased by 10%, the salary will be 1,54,000. Okay, see, I'll just write the thing that I have to find, that is the original salary. So I'll write, let the original salary be rupees X, because I don't know that. I'm just assuming that salary to be X. Now the increase in salary, it's being said that is 10% of original. That means 10% of rupees X, because X is the original salary. Also the new salary is 1,54,000. Okay, so see what I am going to do here. I know that this is my original salary. Okay, जो मतलब previous salary, you can say that X. When I am going to increase it by 10%, that means X plus 10% of X. मतलब जो उसकी पुरानी सैलरी थी दैट वाज एक्स, एंड प्लस जो इंक्रीज हो रही है दैट इज 10% ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू 1,54,000, राइट? क्योंकि ये बताया गया है जो नई सैलरी है वो इतनी है, और जो नई सैलरी है वो कैसे फाउंड आउट होगी? देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज जो पुरानी सैलरी है वो प्लस जितना इंक्रीज हुआ. ओके, तो मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए. X plus 10% of X is equal to 1,54,000. So it will be X plus 10% means 10 by 100 of का जगह multiply into X equals to 1,54,000. Now this 0 in the numerator and 0 in the denominator, they will get cancelled out. So it will be X plus 1 into X is X upon 10 equals to 1,54,000. Now see, हमारे यहाँ पे variables हैं and it's constant here. So what I'll do, I'll just take out the x from here. It will be 1 into 1 plus 10x. Students, you can do it anyway. You can just multiply it like 10x plus 1x upon 10. So it will be 11x upon 10, right? You don't need to do it like this. You can just do it like this. That is x into 10, 10x plus 1 into 1, 1x upon 10. So it will be 11x by 10 equals to 1,54,000. Okay, so my x will be this into, because ये जो वैल्यू है it will get reverse, right? रेसिप्रोकल हो जाएगा जब हम इसको उस साइड ले जाएंगे. So it will be x is equal to 1,54,000 into 10 upon 11. So 11 ones are 11, 11 into 14,000 is this. So into 10 it will be 1,40,000. That means the original salary that the person was having was 1,40,000. Okay, now the next question is, on Sunday 845 people went to the zoo. On Monday only 169 people went. So what is the percentage decrease? See, ये बताया जा रहा है कि संडे के दिन जू में 845 लोग गए एंड ऑन मंडे 169. सो आई हैव टू फाइंड द डिक्रीज. ऑब्वियसली देयर इज अ डिक्रीज हियर बिकॉज संडे को 845 जा रहे हैं एंड ऑन मंडे ओनली 169 आर गोइंग. सो इफ द क्वेश्चन वुड हैव बीन टू फाइंड ओनली द डिक्रीज, देन वी विल जस्ट सब्ट्रैक्ट इट, बट इट इज वी हैव टू फाइंड द डिक्रीज परसेंटेज. ओके, सो जस्ट सी. The question is number of visitors on Sunday, number of visitors on Monday. Fine. Now decrease in the number of visitors, that will be जितना subtract कर रहे हैं, that is normal. यहाँ तक तो सबको आता है. Now to find the percentage decrease, what we have to do, percentage decrease will be जो decrease हुआ वो upon जो initial में था. Initial means जो पहले था. पहले कितना था? 845 into 100. Okay. Students, जब भी हमें decrease निकालना हो, percentage decrease, तो हम पहले उस डिक्रीज को निकालेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे इनिशियल जो था, जो पहली वाली वैल्यू थी उससे, इनटू 100. बिकॉज परसेंटेज अगर से फ्रैक्शन ऑफ डिक्रीज निकालना होता, क्वेश्चन बस इतना होता 679 अपॉन 847, बट द क्वेश्चन इज परसेंटेज, तो इसको हम मल्टीप्लाई बाई 100 भी करेंगे. सो इट इज 4 into 20, दैट इज 80%.
Okay, and the next question is, a shopkeeper buys 80 articles for rupees 2400 and sells them at a profit of 16%. So find the selling price of one article. ये बताया जा रहा है कि बाय किया है, बाय मीन्स खरीदना, दैट इज इट इज द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस जो 80 आर्टिकल्स की है वो 2400 है. ओके, और फिर उनको जो बेचा गया है, बेचने की प्राइस वी डोंट नो, बट इट इज सेड दैट ही इज हैविंग अ प्रॉफिट दैट इज 10% का. ओके, सी cost price is 2400 and the profit is 16%. and students, प्रॉफिट हो या लॉस हो, दैट इज ऑलवेज ऑन द कॉस्ट प्राइस. अगर मैं ये बोल रही हूँ मुझे 10% का लॉस हुआ, सो दैट मीन्स दैट लॉस विल बी ऑन द कॉस्ट प्राइस. ओके, एंड द प्रॉफिट, सो it is 16% of 2400. So it will be 16 upon 100 into 2400. 100 and 100 will get cancelled out and the answer will be 16 into 24, that is 684. तो इतना पता चल के जो प्रॉफिट है that is 684. Now we know that जो सेलिंग प्राइस होता है दैट इज ऑलवेज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. ओके, तो कॉस्ट प्राइस पता है, प्रॉफिट आ गया, सो द सेलिंग प्राइस विल बी 2784 बाय एडिंग देम बोथ. अब जो ये सेलिंग प्राइस है वो 80 आर्टिकल्स का निकला. ओके, बट द क्वेश्चन हेयर वाज फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल. हमें एक आर्टिकल का निकालना है. ओके, सो if the cost price of 80 articles is 2784, so the selling price was this, so the selling price of one article वो कितना होगा, because whenever we have the value for multiple and we have to find for one, we always divide it, so it will be 2784 upon 80, so it is 34.8. that means एक जो selling price थी एक आर्टिकल की, that was 34.8. ओके, जस्ट दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक. बस हमें थोड़े से बेसिक पॉइंट्स याद रखने हैं. सेलिंग प्राइस जो होता है दैट इज ऑलवेज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे.